Hello guys, this is Rajesh Ranjan delivering my lecture to the plus 2 board candidates and NEET aspirants. As you know that this is a specialized chapter for you, and we are proceeding with human reproduction chapter, and the topic is human male reproductive system. You can see here human male reproductive system. Whenever we study biology, we consider three aspects: origin, structure, function. Origin, that is development; structure, external and internal; function means normal function, general function, as well as modification. That means if a body part performs some special function and gets a special shape and size, this is what we call modification. That means general function plus special function. Now, we are talking about human male reproductive system today. Male, this is symbolized as like this. Human male reproductive system includes some structures. First of all, we can write here, that is the male gonad, testis. Testis is the male gonad. Gonad means main organ, main sex organ, principal reproductive organ. Now this organ is responsible for manufacturing or synthesizing male gametes as well as producing male sex hormones, that is androgens, collectively called androgens, and the individual example is testosterone. After 10 to 12 years, the body shows secondary sexual characters. You can see both in males and females. In males, high pitch voice. सही बोला नहीं, low pitch voice. That is, low pitch voice means heavy voice. Development of Adam's apple here in larynx. That is the cartilaginous part. Appearance of mustache, beard. Change in nature, change in mood. So this is due to change in age, that is puberty, sexual maturity, and now all these organs at puberty, it is present, the organs present since the birth, but they grow and develop, they mature to function properly at puberty, that is sexual maturity, 10 to 12 years of age after birth. So testis is the male gonad, means principal sex organ in males, main sex organ, reproductive organ in males. Second, after testis you can see epididymis. Epididymis. Then after epididymis, vas deferens. Vas deferens. First testis, then epididymis, then vas deferens. Number 4, after vas deferens, you can see seminal vesicle. As you see the textbook, 12th textbook, biology, NCERT, you can see the structure, the diagram, and you can make a list of the organs associated with human male reproductive system. First testis, then epididymis, then vas deferens, then seminal vesicle, then ejaculatory duct. After that, prostate. Then comes Cowper's gland or bulbourethral glands. Bulbourethral or Cowper's glands.
and then penis. Now, the main point you can see, testis is 2 in number. Testis is 2 in number. एपिडाइडाइमिस, टेस्टिस से निकलेंगे, एपिडाइडाइमिस भी दोनों तरफ है. वास डिफरेंस 2 in number, vasa differentia plural. Seminal vesicle 2 in number. Ejaculatory duct single 1. Prostate single. Bulbourethral glands 2 in number. Penis 1 in number. So you can note down that testis is 2 in number, epididymis 2 in number, vas deferens 2 in number. So vasa differentia. Now the plural is written as like this, vasa differentia. In frog, vas deferens is absent. So there a longitudinal canal is present associated with kidney, that is called Beeder's canal in male frog, male kidney. Seminal vesicles, vesicles only 2 in number. As testis is 2 in number, so it is written as testes, T-S-T-E-S. As epididymis is 2 in number, so epididymis, plural. In place of I-E is used. Vas deferens, vasa differentia, plural, 2 in number. Seminal vesicles, 2 in number, seminal vesicles. You can see in the body of invertebrates, seminal vesicles do not act like glands. They act for storage of sperms. Ejaculatory duct 1, single, 1 only. Prostate 1, unpaired, single. Bulbourethral or Cowper's gland 2 in number. How many are 2 in number? देख लीजिए. How many? Ejaculatory duct, prostate and penis is single. They are single. And others are double. Okay? Now, testis is meant for manufacturing sperms by spermatogenesis, which begins at puberty. So this is the main organ. This is the main organ, principal organ, main or principal sex organ, primary sex organ. Epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, and penis. These act as male accessory reproductive ducts. Seminal vesicles, इसमें डबल टिक लगा रहे हैं, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड्स, these act as male accessory reproductive glands. In females, Bartholin's glands are present. In females, functional mammary glands are present. Mammary glands are found in both males and females of mammals. They are found in both thoracic and abdominal regions of mammals. So males do have mammary glands but not functional. Okay? So once again I can tell you the principal or main reproductive organ, testis. Then the ducts, accessory reproductive ducts in males, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and penis. The accessory reproductive glands in males are seminal vesicles, prostate and bulbourethral glands or Cowper's glands. Only prostate is single. Others like seminal vesicles or bulbourethral or Cowper's glands are double in number. So this is the only single or unpaired gland, male accessory gland. Okay? So this is the basic idea regarding male reproductive system in human. Now we can see the structure and function of all these structures, the structure and the function of all these parts in detail one by one. You stay with us. Testis.
Before we study testes, we should note down that human male reproductive system is located in pelvic region. Pelvic region of the body means what? Hip region. Hip region. Below the abdomen. And testis, you can see, testis is like this. Testis is like this. 1, 2. This testis is oval in shape and it is located extra abdominal. This is the body. This is the abdominal part. This is the abdominal part of our body. This is extra abdominal. And it starts descending during the embryonic development. In 7th month of embryonic development. You know, in human gestation period is 9 months. In 7th month during pregnancy, if the embryo is going to be a male, that means it should have testes, and it appears after 3 months and it starts descending down. If it fails to descend, this is called cryptorchidism. Cryptorchidism. That leads to sterility in male. Sterility means inability to reproduce. Infertility is temporary, but sterility is permanent. So, if it fails to descend, this is called cryptorchidism, which leads to sterility in males. And this testis is covered in a pouch-like structure called scrotum. This is testis, 2 in number, and covered in a pouch-like structure, scrotum sac. And this scrotum makes a connection with the abdominal cavity through inguinal canal. A passage between the scrotum and abdominal cavity. So, in our body, testis is extra abdominal. In some mammals, it remains abdominal or intra-abdominal. In some mammals, it starts descending or descends during breeding season. Okay. So, that is the adaptation. In humans, it is extra-abdominal. Why? Extra-abdominal and in a pouch-like structure called scrotum. The body temperature, you know, that is optimum 37 degrees Celsius. And testis becomes extra-abdominal. So the temperature here is reduced by 2 to 2.5 degrees Celsius. The temperature is reduced. Why temperature is reduced? It is believed that sperms can be stored at lower temperature than the optimum body temperature. It can be manufactured and stored at lower temperature than lower kitna 2 to 2.5 degrees Celsius than 37 degrees Celsius. Body temperature 37 degrees Celsius है, इसको कम करना पड़ेगा 2 and 2.5 degrees Celsius कम करना पड़ेगा temperature, so that sperms in human may be fresh and fertile. Otherwise, infertility, sterility. So, this is the adaptation in human male. Testis is extra-abdominal. So, testis is 2 in number, you can say. If you want to make notes, oval in shape,
okay, covered in a pouch like a structure, loose pouch, that is a scrotum, remains extra abdominal. अब मिला देंगे तो ये स्पेलिंग हो जाएगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. क्यों? As temperature is reduced and the sperms remain afresh and fertile. This is the adaptation. And testis 2 in number है, इसलिए टेस्टिस हम लिखते हैं. और इसकी एक विशेषता है, वेरी डेलिकेट इट इज, वेरी डेलिकेट एंड क्वाइड यूनिट्स आर देयर. इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. लेकिन टेस्टिस के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे, एक टेस्टिस के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तब स्मॉल कंपार्टमेंट्स. testis, inside the testis small compartments are there and they are called testicular lobules. testicular lobules. इसकी संख्या नंबर 250 के आसपास होती है और प्रत्येक लोब्यूल में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, 1 to 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं. Seminiferous tubules are found. These seminiferous tubules are supposed to be the units of testis because these are the main areas where spermatogenesis or manufacture or synthesis of sperms occur at puberty, which begins at puberty and it continues throughout the life. In males it is never stopped. It may happen that the reduction in sperm count, sperm structure can be seen after 65, 68 you can see. But in females the production of gametes, that is production of ova, is stopped at about 50 years of age. But in males it is never stopped. Okay. So I repeat, testis, plural, testis as 2 in number, oval in shape you can say, covered in a pouch called scrotum, and this scrotum remains suspended through a canal known as inguinal canal to the abdomen of our body. So it is extra abdominal in position. It is a permanent adaptive feature in humans, and it is just to lower the temperature to 2 to 2.5 degrees Celsius to keep the sperms fresh and fertile. And you can see the internal structure. There are compartments in each testis. In each testis you can find testicular lobules and the number is 250. And in each testicular lobule you can find 1 to 3 seminiferous tubules, not uriniferous tubules, because uriniferous tubules means nephrons, the units of kidneys. And here seminiferous tubules, the functional units of testis. And as you know, if a testis is single, the testicular lobule is going to be 250, and inside these lobules 1 to 3 seminiferous tubules, that means 250 to 750, and these are the functional areas where spermatogenesis begins at puberty. Now boys and girls, as we see section of a testis, human testis का एक सेक्शन देख रहे हैं, कट पार्ट. Just to try to understand the internal structure, human testis एक है, उसका सेक्शन है. उसके अंदर आप जब देखेंगे तो ऐसी रचना नजर आएगी. अब इसमें कवरिंग्स हैं,
ट्यूनिका कहते हैं इसको। आजकल इसके बारे में नहीं बताया जाता। ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब आप सोचेंगे वेजाइनस शब्द तो फीमेल के लिए यहाँ कहाँ से आ गया? ये लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये सब लेयर्स हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आप अपने काम की बात जान लीजिए कि इसके अंतर्गत छोटे 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 इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये देखिए, ये लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस लोब्यूल के अंतर्गत आप देख लीजिए इस तरह के, ये देखिए कॉइल स्ट्रक्चर है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे बढ़ रहे हैं, समझना है हमें, नक्काशी नहीं करनी। क्या बोला हमने? ह्यूमन टेस्टिस का एक सेक्शन है। अब इसमें हमने देखा ये कवरिंग्स हैं, कवरिंग्स को ट्यूनिकी बोलते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये कवरिंग्स है। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 से 3 मतलब 250 से 750। अब ये कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं, कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का निर्माण होता है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी पुबर्टी के साथ होता है मेल्स में। अब यहां से ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं, इनको ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। ये देखिए ऐसे जुड़ते हैं, आपस में जुड़ना शुरू किया इन्होंने, ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये जुड़ते 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 यहाँ पर एकदम से इस तरह की रचना हो गई, ये छोटी 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 छोटी, ये देखिए ये इस तरह की रचना हो गई, रेटी टेस्टिस इसको कहते हैं। और यहां से अब ये निकल रहे बाहर की ओर मिल करके। अब इनको हम कहते हैं वासा इफरेंसिया, नॉट डिफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। वासा, ये सब टेस्टिस के अंदर की रचना है। फिर से, एक टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल 250, प्रत्येक लोब्यूल में कितना? 1 से 3, 1 से 3 मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में 750 तक जाएंगे, 250 से 750। यही है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे बढ़ेंगे, ये डक्ट आगे बढ़े ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर आगे बढ़े रेटी टेस्टिस, फिर आगे बढ़े वासा इफरेंसिया। दिस इज द रूट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन दिस वे। आफ्टर वासा इफरेंसिया, all these structures are intratesticular. Now vasa efferentia unite together to form a loose ductular structure, and this loose ductular structure is known as epididymis. जो टेस्टिस में बने थे स्पर्म्स, अब ये जमा होंगे यहाँ टेम्परेरीली, इसी को एपिडाइडाइमिस कहते हैं। और इस एपिडाइडाइमिस के ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर हो गया, बाहर हो गया ना, यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से बाहर हो गई, यहाँ से बाहर, ये बाहर कह गया, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, ये इंट्रा टेस्टिकुलर, ये कहेंगे इसको एपिडाइडाइमिस। तो एपिडाइडाइमिस कैसा होगा? ये पार्ट होगा कैपुट, कैपुट, ये पार्ट होगा कॉर्पस, और ये पार्ट होगा कॉडा। मतलब फिर से एपिडाइडाइमिस, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। कैपुट का मतलब क्या हुआ? कैपुट का मतलब हुआ हेड, इसका हेड पार्ट। कॉर्पस ये मिडिल पार्ट हुआ, मिडिल, बीच का हिस्सा। और कॉडा, कॉडा मतलब होता है टेल, टेल का हिस्सा। यही एपिडाइडाइमिस है। ये एपिडाइडाइमिस, एपिडाई स्पेलिंग देख लेने का, एपिडाइडाइमिस, एक से ज्यादा हो तो ईएस, एपिडाइडाइमिस। यदि टेस्टिस में मैन्युफैक्चर और सिंथेसिस हो रहा है स्पर्म्स का, तो एपिडाइडाइमिस में टेम्पररीली स्टोरेज हो रहा है। अब ये एपिडाइडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएंगे, और वास डिफरेंस से फिर वहां से होते हुए आप देखेंगे कि यह वास डिफरेंस से होते हुए पुनः आगे बढ़ते हुए यूरिनरी ब्लैडर से उधर इंग्विनल कैनाल से जुड़ते हुए इजैकुलेटरी डक्ट, और सारे ग्लैंड्स वहीं पर हैं हमारे, सेमिनल वेसिकल है,
प्रोस्टेट है, काउपर्स है, उसके बाद पेनस से बाहर आ रहे हैं, तो ये आगे का रास्ता बनता है। नेक्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू नो, testis, each testis has 250 testicular lobules. Each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules, means 250 to 750 seminiferous tubules, the units of testis known for spermatogenesis. अब आप देखिए, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये समझने के लिए बहुत सारे एक सेक्शन लिया है और उसमें हमने समझने की कोशिश की है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। तो सिंपल है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम देख रहे हैं और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यू कैन फाइंड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन सा सेल? यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे बहुत सारे सेल यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सेल का नाम है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल है। अब आप बोलेंगे इस मेल जर्म सेल का क्या काम है? यही मेल जर्म सेल हैं जो अभी इमैच्योर हैं और इसमें डिवीजन पावर है। मैच्योर का मतलब लॉस ऑफ डिवीजन पावर। ये इमैच्योर है और सुन लीजिए और समझ लीजिए कि ये यही स्पर्मेटोगोनियम के रूप में यहाँ पर बने हैं और स्पर्मेटोगोनियम से ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके क्या बनाते हैं? फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करके क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड फिर डिवाइड करके बनाते हैं स्पर्मेटोजोआन। तो इसमें शुरुआत में पहले माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस होती है। ये पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यही है मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स व्हिच बिगिंस एट पुबर्टी इन मेल्स। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में फीटल ओवरी से स्टार्ट होता है सिंस द बर्थ। यहां पर ये द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्टेप्स आर spermatogonium, then primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, then spermatid and spermatozoan. The entire process is called spermatogenesis, but this part is called spermiogenesis. यहाँ से यहाँ तक spermiogenesis. Spermatid is heavier and this is tailed part. Every cycle, each and every cycle of spermatogenesis produces 4 functional spermatozoans. तो ये मेल जर्म सेल के जरिए, ये पहला सेल है। यहाँ दूसरा सेल जो इनके अंतर्गत आता है, इनको नॉरिशमेंट देने के लिए, और बड़े बड़े सेल होते हैं और इनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स मतलब ये मदर सेल हैं। ये इनको खाना पीना देते हैं, नर्स सेल्स कहते हैं इनको, या इन्हीं को कहते हैं सस्टेंटेकुलर सेल्स। कितने नाम है बायोलॉजी में? बहुत सारे, ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये मेन जो सेल हुआ वो मेल जर्म सेल हुआ और उनको नॉरिशमेंट देने के लिए सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, सस्टेंटेकुलर सेल्स। और इसके बाहर इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई है। इसमें बहुत ब्लड सप्लाई है। रेड से आप दिखा सकते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत है और बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई भी है। इसको ब्लू से आप दिखा सकते हैं, नर्व सप्लाई बहुत है। यदि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होगा तो आप जान लीजिए एक साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में 64 डेज लगते हैं, यानी अबाउट 2 months। और इसको रिलीज होने में और वेस्ट होने में तनिक भी समय नहीं लगता, फ्यू सेकेंड्स। दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड इजैकुलेशन। एंड वन इजैकुलेशन मीन्स 3 to 8 ml of seminal fluid, white pungent smelling fluid with seminal plasma and sperms. तो ये फ्लूइड में रहते हैं एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। उसमें से 60%, मान लीजिए 3 million होते, 300 million,
तो 300 मिलियन में 60% नॉर्मल शेप वाले होने चाहिए, साइज वाले, और उसका उस 60% नॉर्मल शेप एंड साइज वाले का 40% विगोरस मोटालिटी वाला होना चाहिए, नहीं तो इनफर्टिलिटी फिर स्टेरिलिटी। बट दिस इज ऑल अबाउट इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस का यूनिट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, that is the coiled part, long coiled part, many number। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। inside seminiferous tubules two types of cells are there, male germ cells and Sertoli cells। ये स्पर्मेटोजेनेसिस शो करेंगे और ये उनको नरिशमेंट देंगे। लेकिन आउटसाइड इस कैंपस के बाहर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, यहां अंदर है, ये अंदर है, इनसाइड नहीं, आउटसाइड। यहां पर आउटसाइड, यहां देखिए ये कौन है, ये आउटसाइड। आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यू कैन फाइंड सम स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इस स्पेस में कुछ खास प्रकार के सेल रहते हैं। यही सेल जो हैं, इन्हीं का नाम है लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन्हीं का काम है सिंथेसाइज करना एंड सिक्रीट करना। किसको? एंड्रोजेंस को। एंड्रोजेंस मतलब मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और इसी टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन के कारण, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, फैट सोल्यूबल हार्मोन है, इसी की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज क्लियर दैट दिस individual is male, but secondary sexual characters like change in voice, change in attitude, change in behavior, change in action, maturity, attacking nature, this is shown by testosterone, that is male sex hormone, collectively called androgen. This is synthesized and secreted by Leydig cells or interstitial cells, which makes the testis endocrine, gonad मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। इनका काम सिर्फ गैमेटोजेनेसिस नहीं है, टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स एट पुबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल नहीं है। सिर्फ एक काम नहीं है, और भी काम है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, दैट इज एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और यही कारण है कि gonad also acts as an endocrine gland, secrete hormones, that is steroidal hormones। Okay, as we know that testis is covered in a pouch like a structure, scrotum, और ये स्क्रोटम कैसे जुड़ा हुआ है? इंगुइनल कैनाल से, हमारे एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ से आप समझ लीजिए, ये टेस्टिस है, इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स बिगिन होगा, स्टार्ट होगा पुबर्टी के समय, सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय। यहाँ से स्पर्म्स बन करके मैन्युफैक्चर यहाँ होगा, जमा होंगे टेम्परेरीली यहाँ, जिसका नाम है एपिडाइडर्मिस। उसी तरह से इधर से भी चलेगा, इधर से भी, एक ही साइड से बता रहे हैं। टेस्टिस में मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स बिगिन्स एट पुबर्टी, that is sexual maturity in males, that is 10 to 12 years of age after birth। तो टेस्टिस में मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स हुआ, अब ये आगे बढ़ा, एपिडाइडर्मिस में स्टोरेज होगा, यहाँ से चला ये, इसको कहते हैं हम लोग वास डिफरेंस। इधर से वैसे ही चलेगा, इधर से वैसे ही चलेगा, यहाँ से होते हुए एपिडाइडर्मिस होते हुए वास डिफरेंस आया। अब वास डिफरेंस ऊपर आ रहा है, उसी समय यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी है, और यूरिनरी ब्लैडर से ये अब यूरेथ्रा यहाँ जा रहा है। तो ये यहाँ से जा करके, ये जो वास डिफरेंस है आपका, ये वास डिफरेंस आगे चल करके हमारे एब्डोमिनल कैनाल में इधर
प्रवेश करता है एब्डोमेन में, और इसका नाम क्या हो जाता है, ये आगे चल के ऐसे इंटर किया है इंगुइनल कैनाल के जरिए। अब यहाँ पर आकर के ये किस में जुड़ गया है, आकर के जिसमें जुड़ गया है उसका नाम है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, सेमिनल वेसिकल में आ गए। जो स्पर्म्स आए थे अब यहाँ पर इनको सेमिनल फ्लूइड मिल जाएगा। सेमिनल वेसिकल 60% बनाता है सेमिनल फ्लूइड, विस्कस सब्सटेंस फ्लूइड, और वहां से फिर ये आगे आएंगे। अब यहाँ से जब आएंगे सेमिनल वेसिकल का भी डक्ट आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर का भी डक्ट आ रहा है। सेमिनल वेसिकल का डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट दोनों मिल गए यहाँ पर निकल करके, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से भी आ रहे हैं, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन और सेमिनल वेसिकल से यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता हुआ ये यहाँ पर से स्पर्म्स आएगा। अब यूरिन और स्पर्म दोनों आकर के एक खास रचना में जुड़ेंगे और इस रचना का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये अलग अलग समय पर इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स, लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट हमारे में एक कॉमन डक्ट की तरह काम करता है जिसमें सेमिनल फ्लूइड भी जाता है और यूरिन भी जाता है, पर ये न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल में होते हैं, अलग अलग टाइम में जनरली होते हैं। तो यहाँ से ये आ रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन उसके पास वहीं पर यहीं पर एक और रचना है जिसका नाम है प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल के बारे में बताया था, ये ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है, लेकिन ये सिंगल है और ये कह सकते हैं कि 20% ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड ये बनाता है, ये सिंगल है। इसके बाद एक और इसमें एक ग्लैंड यहाँ पर डबल ग्लैंड है जो इसको मदद करता है, इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, या इसी कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें लुब्रिकेशन देता है और ये इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ आप देखिए ये मस्कुलर पार्ट इसमें ये रहता है और ये धीरे धीरे जाकर के यहाँ पर एक साथ खुलता है। जहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट खुलता है उसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल मीटस। दिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर रिलीजिंग सेमिनल फ्लूइड विथ स्पर्म्स एंड यूरिन, बट एट 2 डिफरेंट टाइम्स अंडर न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। लेकिन इसके ऊपर ये एक कॉमन डक्ट के ऊपर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये है शाफ्ट। शाफ्ट that is the main part of the penis. This is erectile structure, pendulous structure, copulatory structure, muscular structure, and this part, the apical part is called the main part of penis is called shaft. The large muscular, pendulous, erectile, when it is supplied with nerve, when it gets nerve impulse, it becomes erect and that helps in insemination, that is for copulation. And the end, the terminal end is called glans penis. The entire structure is called penis. This is the shaft part, main part, erectile, pendulous and copulatory structure. But the terminal end is called glans penis. This is the terminal part. This is covered with a skin and that skin is called foreskin or prepuce. Prepuce. In some religion, this foreskin or prepuce is surgically removed. That's what we call circumcision. It is believed that it will not allow infection or harboring of bacteria. And to be honest, about 60% cases in Africa you can see, due to circumcision there is reduced cases of cancer and AIDS. But I am telling you the religious belief. In some religions circumcision is done and the beneficial aspect I have mentioned, but it is not necessary. In some religions it is allowed to retain foreskin. Inside this is a particular gland that is called Tyson's gland, from which waxy secretion is given out, that is a smegma.
waxy secretion. So personal hygiene needs to be maintained, otherwise there would be large harboring of bacteria and that can be dangerous for us. Okay. So a penis is the, you can say, a penis is the copulatory organ. Once again I am telling you, testis is the main reproductive organ, principal sex organ, that is male gonad, and एपिडाइडमिस का क्या काम है? एपिडाइडमिस टेस्टिस, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म्स, एपिडाइडमिस टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, वास्ट डिफरेंस, कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, सेमिनल वेसिकल producing maximum part of seminal fluid, there it is nourished, retained for some time, then it is allowed to move. Prostate, that forms little part, you can say 20 to 30% part of seminal fluid. Then Cowper's gland for lubrication of penis, and this is ejaculatory duct. This is the common duct for releasing sperms or seminal fluid, or you can say urine, and it is covered with a muscular part. That's what we call penis. The main part is shaft. That is kya? Erectile, pendulous, muscular and copulatory organ with an end glans penis covered with foreskin, prepuce, and here Tyson's glands are present, secreting waxy secretion for keeping it moist. Okay, but inside this duct, lubrication is maintained by this Cowper's or bulbourethral gland. Okay, so the testis with scrotum remains extra-abdominal. Others are, you can see, associated structure. All these unite together. The testis along with these ducts and glands unite together to form male reproductive system in pelvic region. As I mentioned earlier, testis for manufacture of sperms, epididymis for temporary storage of sperms, vas deferens for conduction of sperms, that is transport of sperms. After that comes vas deferens के बाद you can see seminal vesicle. As I have mentioned, seminal vesicles forms 60% of seminal fluid secretion. 60% of seminal fluid is formed by seminal vesicle. This is a glandular structure. 2 in number, forms 60% of seminal fluid. This seminal fluid contains what? This contains fructose. This is the main part. Fibrinogen, hyaluronidase, fructose, fibrinogen, hyaluronidase, then prostaglandin and ascorbic acid. So this is the site for temporary storage, nourishment for the sperms in a fluid medium, and this seminal fluid is white, pungent smelling, white colored, pungent smelling, viscous substance. Okay. Then comes prostate. Prostate is single, and it forms 20 to 30% of seminal fluid. And this contains what? This contains the composition of prostatic part of seminal fluid. You can see citric acid, fibrinolizing, citric acid, fibrinolizing plus acid phosphatase, ये सब होंगे, एटसेट्रा. उसके बाद नंबर आता है काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल.
You can compare it with Bartholin's glands of females. That is for lubrication of penis. Only prostate is single, others are double. Seminal vesicles, Cowper's or bulbourethral glands are three reproductive glands in males. Seminal vesicle double, Cowper's or bulbourethral double, prostate single. Okay, and then comes ejaculatory duct. वो तो आपको बता दिया. Ejaculatory duct, that is for release, common duct for release of क्या? Semen, and that is semen means seminal fluid with sperms and urine. And then comes penis. That is the single, large, pendulous, erectile, copulatory structure in males. Copulatory structures. And it is muscular. It is large, long, erectile, pendulous, muscular and copulatory structure. Penis. I hope that you will find it beneficial, and you should like, subscribe and share my channel. Get benefited and be happy. Good luck.